Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your science teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your science class. My dear students, as you know that we are on chapter number 3, that is human health, and today I will deliver its 8th lecture. And in today's lecture, we will discuss about clean drinking water and what makes water dirty. So my dear students, साफ पानी क्यों ज़रूरी है और कौन सी चीजें हैं जो पानी को गंदा कर देती हैं, आज हम इस बारे में पढ़ेंगे. बट बिफोर दैट लेट्स क्विकली रीकैप व्हाट वी डिड इन द प्रीवियस लेक्चर. फॉर दैट लिसन टू द क्वेश्चंस वेरी केयरफुली एंड देन आंसर देम. व्हाट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स आर प्रोवाइडेड बाय दीज फूड्स? डेयरी एंड मीट. Very good, very nice. They provide proteins and carbohydrates and fats also. So my dear students, now is the time for an ice-breaking activity. Show students given picture and ask them, do they think ever that we can eat water too? How can we fulfill the needs of water in our body? How much quantity of water we should take in a day? So my dear students, क्या आपको लगता है कि हम सिर्फ चीजें खाकर पानी की जरूरत को पूरा कर सकते हैं? Of course not. पानी की हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा अहमियत है क्योंकि हमारी बॉडी का बहुत ज़्यादा हिस्सा जो है वो पानी के ऊपर मुश्तमिल है. सो वी नीड वाटर, वी नीड फ्लूइड्स टू सस्टेन दिस बैलेंस. सो अगेन टेल मी कि क्या आपको लगता है पानी का हमें कितना पानी जो है वो डेली बेसिस पे कंज्यूम करना चाहिए, कितना फ्लूइड हमें डेली इनटेक करना चाहिए? 3 letters we discussed that earlier. Very good. So my dear students, we must take in fluids, juices, milk and water to maintain our needs, to fulfill our needs of fluids. So in today's lesson, we will discuss about clean drinking water and what makes water dirty. So my dear students, let's quickly look at the Islamic perspective. It is He who sends down water, that is rain, from the sky. From it you drink and from it grows the vegetation and which you send your cattle to pasture. So my dear students, अल्लाह ताला ने आसमान से बारिश को बरसाया है जिससे हम अपनी प्यास बुझाते हैं, पौधे जो हैं वो ग्रो करते हैं और जो जानवर हैं वो भी पानी पीते भी हैं और वो पौधों को खाते भी हैं. So my dear students, water is extremely important. So in today's lecture, students will be able to understand the value of clean drinking water and inquire about the factors that generally make it unclean. So my dear students, now let's move towards the pre-reading question. Quickly tell me, should we drink dirty or clean water? Of course, clean water. Which activities make our drinking water dirty? If we throw garbage in the water, if any sewage or oil or gas leaks in it, then our water becomes dirty. So my dear students, let's quickly move towards page number 46 for the reading. Quickly open it in your books. I hope everybody has opened the page. Now let's start reading. Put your fingers where I will read. Drinking clean water. Can you drink water having soil, sand or having a different color? Certainly not. Polluted water is associated with health risks such as some diseases like cholera, typhoid, hepatitis, etc. Polluted water moreover accumulates toxins in our body, like heavy metals such as arsenic, mercury, lead, etc., causing many diseases, even cancer. Our body performs well when we drink clean water. Clean water avoids the risk of diseases and helps the body to get rid of toxins. We therefore drink only clean water. So my dear students, अगर आप साफ पानी नहीं पिएंगे, पानी बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आप साफ पानी नहीं पिएंगे जो कि डर्टी होता है, मडी होता है और इस तरह का पानी या जर्म्स वाला पानी आप कंज्यूम करेंगे तो ऑफ कोर्स आपकी जो बॉडी है वो हेल्दी नहीं रहेगी, आपको डिफरेंट डिजीजेस लग जाएंगी और इससे जो है वो पेट खराब हो जाता है, डायरिया हो जाता है, टाइफाइड हो जाता है, हेपेटाइटिस हो जाता है. इसके अलावा पोल्यूटेड वाटर के अंदर डिफरेंट जो है वो मेटल्स भी होते हैं जैसे कि आर्सेनिक और मर्करी, और ये भी आपको डिफरेंट जो है बीमारियों में मुब्तला करते हैं जैसे कि कैंसर जैसी मुज़िमर्स. इसके अलावा सिर्फ जो है साफ पानी पीने से ही हम अपनी बॉडी को जो है वो हेल्दी रख सकते हैं. इससे हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स जो है वो भी रिलीज होते हैं और हमारी बॉडी हेल्दी रहती है और एक्टिव रहती है. सो व्हाट मेक्स द वाटर पोल्यूटेड? पानी को क्या चीज गंदा करती है? क्विकली ओपन पेज नंबर 47 इन योर बुक्स. वेरी गुड. व्हाट मेक्स द वाटर पोल्यूटेड? द फॉलोइंग फैक्टर्स मेक द वाटर डर्टी. Air pollution, that is acid rain,
poor sewage system, pesticides and fertilizers. Now let's start with the air pollution, that is acid rain. The burning of fossil fuels adds gases such as sulfur dioxide, nitrogen dioxide, carbon dioxide into the air. These gases, when react with rainwater, form acids and make rainwater acidic. The acidic rainwater is absorbed by food crops and becomes part of the human body, causing health issues like breathing disorders, stomach issues, etc. Acid rain also pollutes underground water resources. So my dear students, different जो pollution की वजह से जो हवा में शामिल होती है, डिफरेंट गैसेस जो हैं वो हवा का हिस्सा बन जाती हैं, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड. और जब ये हवा में जब बारिश आने के लिए पानी जो है वो इकट्ठा होता है, तो ये गैसेस जो है वो उस पानी के साथ मिल जाती हैं और रिएक्ट करती हैं एंड दे फॉर्म डिफरेंट एसिड्स. और इस तरीके से एसिड रेन जो है वो बनती है. और एसिड रेन जो है ये हमारा व्हेन इट कम्स डाउन, तो ये प्लांट्स का हिस्सा बन जाती है, बिकॉज प्लांट्स एब्जॉर्ब दैट वाटर. और जब आप ऐसे प्लांट्स को कंज्यूम करते हैं तो आपको डिफरेंट ब्रीदिंग इश्यूज होते हैं, स्टमक इश्यूज हो जाते हैं. इसके अलावा जो एसिड रेन है, इसकी वजह से जो अंडरग्राउंड वाटर है वो भी पोल्यूट हो जाता है. तो पोल्यूशन की वजह से आप देख लें कि कैसे पानी जो है वो गंदा हो जाता है एयर पोल्यूशन की वजह से. नेक्स्ट इज पुअर सीवरेज सिस्टम. In most places, sewage pipes are set closer to water pipes under the ground. Any defect or wear and tear in these pipes result in the mixing of both types of waters, that is rainwater and drinking water, leaving the later one unfit for drinking purposes. Such water causes severe health issues such as dysentery, diarrhea, typhoid, hepatitis, etc. So my dear students, अक्सर जो है sorry जो पाइपलाइंस अंडरग्राउंड पानी के होते हैं, सिवरेज के और वाटर के, पीने वाले पानी के, वो साथ साथ बिछाए होते हैं. और अगर इनमें कोई डिफेक्ट हो जाए तो उसकी वजह से दोनों का जो पानी है वो आपस में मिल जाता है और बाद में जो ड्रिंकिंग वाटर है वो हैजर्डस हो जाता है, हार्मफुल हो जाता है. इसकी वजह से बहुत सी डिजीजेस फैलती हैं, जैसे कि डायरिया, डिसेंट्री और हेपेटाइटिस जैसी डिजीजेस, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है. तो पानी को आलूदा करने का एक तरीका ये भी हो गया. Next is pesticides and fertilizers. Farmers use pesticides and fertilizers for the betterment of crops. These chemicals seeps into the soil and approach underground water, making it contaminated. All the above mentioned factors make our drinking water undrinkable, causing many diseases. We therefore should purify it before drinking. So my dear students, here you have seen कि पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स जो कि फसलों के ऊपर स्प्रे किए जाते हैं कीड़े मकोड़ों को और इंसेक्ट्स को मारने के लिए, इंसेक्टिसाइड्स को किल करने के लिए, और डिफरेंट जो फर्टिलाइजर्स हैं जो प्लांट की ग्रोथ को स्पीड अप करते हैं, जब वो स्प्रे किए जाते हैं तो वो अंडरग्राउंड वाटर का हिस्सा बन जाते हैं और इस तरीके से ये उसको पोल्यूट कर देते हैं और वो दैट इज़ नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग. और अगर ऐसे पानी को पिया जाएगा तो बहुत सी डिजीज़ेज जो हैं वो फैलती हैं. तो जितनी भी अभी हमने वाटर पोल्यूशन के बारे में बात की है कि कैसे कैसे पानी पोल्यूट होता है, ये तमाम जो है ये पानी को ख़राब करते हैं और इस तरह का पानी जो है वो पीने के लिए फ़िट नहीं होता. हमें चाहिए कि हम पानी को हमेशा फ़िल्टर करें या प्योरीफाई करें पीने से पहले. सो माय डियर स्टूडेंट्स, ड्रिंकिंग वाटर मस्ट बी क्लीन टू कीप यू हेल्दी. इफ़ यू विल ड्रिंक अनहेल्दी वाटर, dirty water, it will cause many diseases like cancer, typhoid, hepatitis and diarrhea. Air pollution, acid rain, poor sewage system, pesticides and fertilizers, they are the cause of water pollution. So acid rain बारिश में मुख्तलिफ आलूदगियाँ शामिल होने की वजह से होती है और इससे जो है वो हेल्थ इश्यूज़ होते हैं. इसके अलावा सीवरेज सिस्टम का पानी अगर ड्रिंकिंग वाटर के साथ मिल जाए तो उससे भी जो है वो आपकी सेहत के ऊपर बहुत ही बुरे असरात जो है वो पड़ते हैं और ऐसा पानी पीने से आपको डिफरेंट जो है वो बीमारियाँ हो जाती हैं. तो पानी को हमेशा प्योरीफाई करना चाहिए. इसके अलावा अगर फर्टिलाइजर्स जो है वो अंडरग्राउंड वाटर का हिस्सा बनेंगे और उसको पिया जाएगा तो ये भी पानी को पोल्यूट करता है और ऐसा पानी भी ड्रिंकिंग के लिए सेफ़ नहीं होता. सो कोशिश करें कि हमेशा पानी को प्योरीफाई करें, साफ़ करें, फ़िल्टर करें और फिर उसको कंज्यूम करें पीने के लिए. So now is the time for practice. You can download this worksheet from the description box below this video or you can get it in print form by your teacher. So my dear students, write down your name and your roll number. Then answer the following questions. What makes water unclean? What are the gases that cause acid rain? Sulfur dioxide, nitrogen dioxide and carbon dioxide. Where does sulfur dioxide come from? Different factories
Smoke, it has sulfur dioxide in it, whereas nitrogen dioxide comes from, it also comes from the exhaust of cars and factories. What is acid rain? Why acid rain is a problem? You can take help from the book. What types of problem caused by the poor sewage system? How pesticides are harmful for drinking water? So my dear students, this is the worksheet. Pause the video and complete it. I hope you have finished it. If you find any difficulty, you can re-watch the video or you can take help from your book. So my dear students, now is the time for evaluation. What type of water we should drink? Clean water. What factors make our drinking water unclean? Air pollution, poor sewage system, and mixing of fertilizers in the underground water. So for your homework, you will do question number 6 from section number B, and you will do question number 4 from section number C. Question number 6 from B and question number 4 from C. So my dear students, in today's lecture, we have learnt that air pollution causes acid rain, which is absorbed by food crops and make human bodies unhealthy. Poor sewage system cause mixing of pollutants in drinking water bodies that causes health issues. Pesticides and fertilizers absorbed by soil and approach to underground water. This also cause water pollution. So my dear students, I hope you will always prefer to drink clean water to keep yourself healthy. So my dear students, keep everybody around you safe. Have a good day. Thank you so much and Allah Hafiz.